लेट मी कॉल अन्विता। उसका इश्यू क्या हुआ है? ये खत्म होने वाला है। तो कि इन फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन यू हैव observation कि लीनियर in linear momentum final. Example in 22nd question. Mass was at rest. If I do it fast, I know here linear momentum will be zero because final momentum should be zero. Okay. When it explodes into three fragments, their mass is given and equal mass they move. What will be the third part? If now I have to do, correct? So what will happen? In this case, first two square 4, second two square 2 root 2. ठीक है और यार But ये tab but if you want to know it logically how this happened, then you have to follow this routine. Key linear momentum by time. So it means change in momentum. Linear momentum will be final. So everything is zero. When here you have 2 MV, take their resultant. Resultant will be under root. That's why we get this answer. Okay. In second question, what happened to same situation? Initial linear momentum will be equal to the final, and you will get the answer. Then 425 and 26 exactly same. Example in 2 minutes. Explosion break a rock into three parts in a horizontal plane. Two of them go off right hand. Part of mass 1 kg. So explosion occurs, three parts move horizontally in the plane. First part of mass 1 kg move with this velocity. Second part of mass 2 kg move with this velocity. Third part fly of 4 mass of this. So देख लेते हैं तो इन दिस केस में यहीं पे कर लेता हूँ. So 2 it means third will be opposite and these two resultant will be this. What is the linear momentum of the first? Mass is 1 and the velocity is 12. So linear momentum will be 12. Second case, mass is 2 and linear okay. Take their resultant 16 square 256, 12 square 144, total 400, under root will be 20.
So what is the resultant linear momentum? 20. This will be equal to the third one. Correct? सर 3 कैसे आया? 3 nahi aaya, third one. Third linear momentum. So what is the mass? We have to calculate. What is the speed of third one? 4. What will be the answer? 5. Tell me guys, is it too fast or you understood everything? You understand. Okay. Other people. हाँ Huh. Barinder? Barinder. P initial is equal to P final. Initial was 0, final should be 0. That's why both are equal and opposite. They will cancel out each other. This is the exactly same question. Right. In the same way. Explosion occur. Oh. बरिंदर समझ में आ गया था लास्ट क्वेश्चन? yes sir. अब यही क्वेश्चन करो सारे और जल्दी से आंसर बताओ. Exactly same thing like previous one. सर 5th D. Okay. सोल्व तो करो इसको. तो कर दूंगा 2 मिनट लगे. नहीं D तो नहीं. What is 1 kg bar? Sir, 5 kg. 5 kg. Barinder and Radhika. Barinder and Radhika. Sir, 2 minutes. What is mass? Hmm. Radhika is there. Yes. Yes, sir. हाँ Radhika. हो गया सॉल्व क्वेश्चन? सर इसमें Yes, sir. क्या कर What is your answer? Sir, 5 kg है. 5 kg and 26 ton. हाँ sir. Sir, 5. This question, this type of question, you will see there is a one logical thing. There is one logical thing. कि in such situations, when there are two particles moving perpendicular to each other, having m1 v1, m2 p2. So here you will have linear momentum p2. Here you will have linear momentum p1. They will have one resultant, correct? And this resultant will be equal to p3, equal and opposite, which is equal to m3 v3, correct? How to calculate? Based on this situation, can you say you will take this resultant of P1 and P2. So P1 square plus P2 square, then under root will be equal to P3. It means M3 V3 will be equal to
m1 v1 का होल स्क्वायर m2 v2 का होल स्क्वायर अंडर रूट that to solve such question. Now you can directly put the value in this. Okay. और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डिराइव है ना. अब देख लेते हैं इसमें ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं. अरे ये तो बैक क्यों चल रहा है. अब जैसे 26 क्वेश्चन है, इसमें अप्लाई करके देखें ये काम कर रहा है कि नहीं फॉर्मूला. m3 कितना है? 26 में करना है. m3 में 4 है. क्या बोलते हैं, मास हमें निकालना है इज इक्वल टू m1 v1 1 मल्टीप्लाई बाई 12 12 स्क्वायर 144 तो ऐसे ही किया. and 2 and 8 16 का स्क्वायर 256 total will be 400 under root will be 20 same like this. अब इसमें भी अप्लाई कर लेंगे. mass is this explode rest means initial linear momentum 0 3 fragment m 3m equal masses fly off mutually perpendicular to each other with this speed. Okay, equal mass. Then what will be the heaviest fragment speed? So heaviest fragment mass is 3 and speed we have to calculate. Correct? मतलब इन दोनों के साथ स्पीड दे रखी है 1 और 1 के साथ 21. हाँ, इन दोनों के साथ दे रखी है. तो 21 तो मल्टीप्लाई 21 स्क्वायर 441 21 स्क्वायर 441 अंडर रूट. ये कितना हो गया? 882 अंडर रूट. So what will be the value? So guys, what is 441? 21. 21 का square 441. So can we say it will be 21 under root 2? Yes sir. 882 is 21 under root 2. 3 7s are. So answer will be this. Done. Yes. 7 root 2. Yeah. Yes. Understood, guys? Was it easy to do by this method now? हाँ सर. Barinder and Radhika. Yes, sir. इस मेथड से आसान है कि डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. Yes. राधिका. Yes, sir. 27th question. In this 27th question, we have to apply Lamè's theorem. And we are already done with it. Lamè's theorem. कि F1 divided by its opposite angle sin alpha is equal to F2 opposite side sin beta F3 opposite side sin gamma. ठीक. Opposite side is important. If this is 60, can we say this will be 30? Huh? Right? Any doubt? And if this is moving parallelly, if this is 30, this will also be 30. This will be 60. Yes sir. पैरेलल है वो 60 और 60 तभी 60.
You can check whether total is 180 or not. So, and what is this? 90 of course. What is this? 60. ये सर 60 कैसे है? टोटल 90 है ना इतना, हाँ, x और y के बीच में 90 है ना, 30 ये तो रिमेनिंग कितना होगा? 60. Now what you have to understand is that these three forces have different angle. So you will do like this. Okay. First force 4, and here angle will be 180. Look, straightforward it is 180, right? Then second 120 and remaining 60. Yes or no? तो 1 के अपोजिट में क्या है? 180 डिग्री एंगल है ना. 2 के अपोजिट में क्या है? 60 डिग्री एंगल. एंड 4 के अपोजिट में 120 डिग्री एंगल. So you have to put values. If I am saying कि 4 के अपोजिट में क्या है? 2 120 अच्छा sin 120. If I am saying 1, what is the opposite to 1? Sin 180. 180. And if I'm taking 2, what is the opposite angle to the 2? Sin 60. Done. बस यही था. Yes or no, guys? Opposite angle. Done. Understood? Yes, sir. Yes. If you understand this, what it is asking. Now we can read question. Three force acting on a body shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, you have to solve this question in this way. The total force should be present in the y direction. You should have resultant force only along the y direction, either positive or negative. Correct? Magnitude of the minimum additional force needed. How much force do you need? So resultant force will be only along with this. So if you take 2n, you can take its cos theta, 2n cos 30, correct? If you take 1n, you can take 1 cos 30, same here cos 30. So you will take all the component along with the y-axis. Should I explain this again? Yes, sir. Pratigya, Ekam, Yes, sir. आंसर बता दो बस. Radhika, Yes, sir. do I need to explain this again? Sir, no, I understood that question. Yes, Okay. sir. Me also. So this is the xy axis. This is minus plus y. This one is plus x and minus x axis. Okay. First force is this here. Second force is here. Third force is here. What is the value of this force? 4. This force 1 and this force 2. These are F1, F2, F3. Okay. Second. If this is 1 and this, what is this angle? 30, na? So can we say here you will have 1 cos 30 and this will be 1 sin 30. Correct? Any doubt? Make sense? I made two component of this one, cos component and sine component. Done. Second, if I know this angle is 30 degree, this will also be 30 degree. Again, this F2, 2 force will have two component. Here it will be 2 cos 30
and this will be 2 sine 30. Yes or no, guys? Understood? Yes, sir. Third, if this is 30, here it will be 4 cos 30, and this is 4 sine 30. Yes or no? You have three force. Every force will have two components, like a cos and sine. Yes, sir. If line is present along the theta, cos opposite sine. Any doubt, guys? It is saying that force net should be present only in y-axis. No force should be present in the x-axis. So it means force on the x-axis and plus x-axis and minus x-axis should be same. They will cancel out each other, and in x direction, net force will be zero. Yes or no, guys? Yes, sir. So I need f amount of force plus 4 sine 30 is equal to 1 sine 30 and 2 sine 30. Correct? Sine 30 value is 1 by 2. So this will become 2 for 1 by 2. Okay. This is 1 by 2, and here it will be 1. So on left hand side, we have 2 Newton force. On right hand side, we have 1.5 Newton force. It means we need force this side. How much force? Half. Tell me, guys, make sense? Make sense? How I got to know? जब मैंने ये कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स साइड में वैल्यू आई है मेरी 2 न्यूटन, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई गॉट वैल्यू हाफ एंड 1.5. It means I need half Newton on the right hand side, so both can counter each other. Yes or no, Pratigya and Varinder? Yes, sir. So what should be the force required in this case? In x-axis, it should be half Newton. Make sense? In plus x-axis. समझ गए? अब बताओ, ऐसा ऑप्शन दिया है हाफ न्यूटन? Is option A given in your answer? Yes. बताओ क्या डाउट है इसमें? अब लैमिस थ्योरम लगानी थी, बट लैमिस थ्योरम के साथ ये भी तो देखना है ना कि ये खुद बोल रहा है इन y force should be present only in y direction. Means all force present on the x-axis will cancel out each other. If they are cancelling out each other, force on plus x and minus x should be same and opposite. When we check here, it become 1.5, here 2. It means you need half Newton on right hand side. So overall both become 0 and cancel out each other. Tell me, guys, any doubt? Varinder and Pratigya. No doubt, sir. Okay. अब पहले हम कल वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक दो तो आज वाले भी कर लेते हैं, फ्रिक्शन वाले. Radhika, tell me 28th question. A block of mass, a block of mass 2 kg is placed on the inclined surface of coefficient nu. G value is this. What will be the net force acting on the block will be? ये कैसे करना? Sir, the net force Right. acting on the block will be 0, sir. Why?
Sir, because like if we say about that diagram, means like from both the sides, like to find F net, हाँ like we'll take sin theta and cos theta. हम्म And as the values are same and they gave the value of mu what is the there, new value? mu value is also given. So when we substitute, we'll get What is new 0. value? Mu value will be 1 by root 3, tan 30. 1 by root 3. Yes, because we know according to the angle of repose, nu will be equal to 10 alpha. We did this. Yeah. So alpha value is 30. So 10, 30 value is equal to 1 by root 3. Correct. So you are right. Here, if you see what is the frictional force on this, you know, frictional force value is nu n or nu mg. What is nu value? 1 by root 3. What is mass? 2. What is g value? 10. Sir, 1 by root 3 कैसे है? Because nu formula is equal to 10 alpha. Angle of repose. Yes, sir. Alpha value is 30 given in the question. Yes, sir. So, and Sir, 10, ये 30 value is 1 by root 3. M क्या दिया हुआ है 1 upon root 3? तो मास है ना? नहीं, मास अगर दिया होता तो फिर ये उसमें होता तो ये कि न्यू की वैल्यू ही दी हुई है. U की वैल्यू दी हुई है. हाँ, फिर तो ये यही यहाँ पे काम करता है. बट बात क्या है, अगर नहीं दी होती तो तब भी हमें पता होना चाहिए था कैसे निकालना. हाँ जी सर. दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू एक्स्ट्रा स्टफ कि अगर नहीं दिया होता तब भी इससे निकालना पड़ता. तो लॉजिकली एकदम करेक्ट है. तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हुई? फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू इज 20 अंडर रूट 3, है ना. अब देखो, क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लो. सो एक तो ये फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स. इफ इट इज नॉट मूविंग तो नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो. इफ ब्लॉक इज नॉट मूविंग, नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो. तो तुम वो पूछ सकते थे कि सर, व्हेन यू नो इफ ब्लॉक इज नॉट मूविंग नेट फोर्स इज जीरो, तो व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग दिस? आगे भी तो करना है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ी ना है. आपको कैसे पता चला नेट फोर्स रुका हुआ है ये? तभी तो मूव नहीं कर रहा ना. ये यहीं पे रफ सरफेस पे है, फिगर में दिखा रहा है. तभी अगर मूवमेंट कर रहा होता तो वो दिखाता कि इट इज मूविंग डाउन विद दिस स्पीड. समझ गए? तो दिस क्वेश्चन Calculate the maximum एक टर्म, acceleration. कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर of the car remains stationary, and coefficient of static friction between the body and this, and g value is this. सर इसमें हम करें सर इसमें हमने फ्रिक्शन फाइंड करनी है. सर म्यू एस एन. अब force is equal to mass into acceleration, and this should be equal to friction force, so it remain at rest. Make sense? Force forward when car is moving is ma, and if it is not moving it should be equal to the friction ma. What is the friction value? Nu mg. Correct. Yes. So mass is cancelled out. What is the a value? Nu g. What is nu value? 15.10. What is the, no, 15.100. What is the g value? 10. What will be the answer? Tell me guys, is it really difficult? अब इसमें क्वेश्चन निकालना बड़ी बात है. इट्स नॉट अबाउट द हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन, इट्स अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन दिस. यू शुड अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि when body is lying and it remains stationary, how is that possible? Example, you have a body of mass m
and this mass remains stationary, it means forward force and backward force should be same. Only then it will be equal. What is the forward force? Ma, mass into acceleration. Acceleration we have to calculate. What is the backward force? Friction. सर इसको म्यू एस एन से भी सॉल्व कर सकते हैं. न्यू एस एन, व्हाट इज एस एन? SN हाँ, न्यू एस की जगह न्यू ही बोलते हैं, क्यों ही एस और ऐड कर. एस नहीं लगा. मतलब लगा सकते हैं, बट वही बात है, एक और ऐड करके क्यों ही कॉम्प्लिकेटेड कर इसको. एस का मतलब ही स्टेशनरी होता है. स्टेशनरी में अगर वो मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक होगा. स्टेशनरी की वैल्यू 10 होती है. स्टेशनरी की वैल्यू नहीं जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड कर सकते हैं. मुझे अगर क्वेश्चन में ना दी हो जैसे इसमें नहीं दी. स्टेशनरी की वैल्यू किस चीज की? म्यू एस एन. इसमें म्यू एस एन में क्या वो तो दिया हुआ है ना यहाँ पे एस की 0.15 वैल्यू क्या होगी? है. एस की वैल्यू एस अलग चीज नहीं है, न्यू एस को एक साथ लिखते हैं, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन स्टेशनरी सिचुएशन. और एन क्या होएगा? बट एंड नॉर्मल. नॉर्मल में एन इज इक्वल्स टू एमजी दिया नहीं हुआ. जी की वैल्यू. अब पता चला कि न्यू एस जब बोलते थे तो और कंफ्यूजन होगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा एस कहाँ पे है मेरा. एस नामी कोई चीज होती नहीं. बताओ गाइस, कोई डाउट है इसमें? क्या बहुत मुश्किल सवाल था ये? अब पहले जो तुमने कल क्वेश्चन किए थे वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे. चलो ये एक इसका भी सॉल्व कर ही लेते हैं, 46 का. हाँ. प्रतिज्ञा 46. What, ये sir? 46 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद डाउट लेंगे. बट राधिका, तुम्हारे डाउट रहते हैं ना 2 3? हाँ सर. हाँ, तो बस वो कंप्लीट करेंगे अभी. वरिंदर, तुम्हारे कोई डाउट बचे हैं? सर लास्ट वाले क्वेश्चंस में ठीक है, वो भी बात करेंगे. तो क्योंकि आज हमने सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट कर लिया, तो ये दे लेते हैं. ए बॉब is whirled in a horizontal plane by mean of the string with initial speed this. This is the roof. You have a string attached to bob and it is rotating. Okay. Tension in the string is T. If the speed of the bob become double angular velocity and radius is same, what will be the tension in the string? Tension in this situation is equal to mg, downward direction. Correct? Because bob has some mass m, so tension will be this. And if it is rotating, then tension is equal to mass into alpha angular acceleration, rotation. It should be same. So how do you calculate mass into acceleration in this case? Acceleration value is r alpha, and acceleration value is also equal to v square by r. ऐसे निकालते हैं ना. And you know v is equal to r omega, so v square will be equal to r square omega square by r. R cancel. So in simplest way, acceleration is equal to r omega square. Or acceleration is also equal to v square by r. Both are same thing. Yes or no, guys? Simple. Acceleration is equal to r omega square and v square by r. And if you don't remember, let me show you. We did in the circular motion. Circular motion. V is equal to r omega.
correct? V is equal to R omega. Anything else I mentioned here? V is equal to R omega, so acceleration is equal to V square by R. Also equal to, acceleration is also equal to R omega square. Why? Because we have to put V value here, R omega. अरे ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला. एंड व्हेन यू नो दिस फॉर्मूला, अब काम बहुत आसान हो जाएगा. कैसे? बिकॉज टेंशन डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट? Now T2 by T1 change in the tension is equal to, what is the omega in second situation? 2 square. What is the omega in first situation? What will be the value? Tell me, guys. You understood, or should I explain this again? समझ में तो नहीं आया. ये सन्नाटा बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है. वरिंदर, राधिका, प्रतिज्ञा, समझ में आया ये? नहीं सर सर, थोड़ा वापस से थोड़ा ऊपर. हाँ, अब दोबारा से बता देते हैं, क्योंकि तुम्हारा सर्कुलर मोशन अभी अच्छे से नहीं हुआ है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है. आज ही हमने किया है, ठीक है, इस वजह से. तो जब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में 2-3 चीजें तुमने पढ़ी थी. पहला कि जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जो कि होता है थीटा, ये किसके बराबर होगा थीटा? इसको निकालने का बड़ा इजी सा तरीका है, आर कितनी है डिवाइड बाय रेडियस. तो हमने बोला आर इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा. दूसरा, एंगुलर वेलोसिटी which is also represented by omega is equal, and this omega is equal to d theta by dt. Okay, you know velocity is equal to dx by dt. Same velocity is also equal to r omega. Second thing. Third, angular acceleration alpha. This alpha is equal to d omega by dt. Same as how acceleration is equal to dv by dt. Okay, so if you put value, it will be equal to v square by r. What is the v value? R omega, according to this, square by r. So what will be acceleration value? बताओ, कोई डाउट यहाँ पे? No, sir. This is the basic circular motion formula. In this current question, we are saying that we have a roof. This roof is connected with a string, and here you have mass. This string have tension T. Mass is m, and it will rotate. Okay, you know, if you so I will turn on the camera. Guys, am I visible? yes sir. तो होता क्या है कि इस सिचुएशन में यू हैव ए वायर लाइक दिस, ओके, स्ट्रिंग, and at the end of the string bob is attached. So if it is in the rest situation, what will happen? This string tension will be equal to the mg, but now it is rotating like this. So now you have circular motion, and here tension will be equal to ma, mass into acceleration, mass into
acceleration. Any doubt? No. Any doubt, guys? हाँ, No, तो sir. वीडियो अब बस यही पॉइंट तुम्हें समझना था. That's what you have to understand. तो कहाँ गया? अगर तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया तो अब ये देख लेते हैं कि when it is rotating in the circular motion, so T will be equal to mass into acceleration. And we know acceleration is equal to r omega square. Yes, sir. So this is your final destination. Yes, sir. What it, according to the question, what it is saying? Mass is fixed. Huh? Mass is fixed. You cannot change mass. Even it said radius is also fixed. So we will change acceleration. So what is changing? Omega. Omega. So can we say tension directly depend upon the omega square? Yes, sir. अब T1 T वैल्यू पुट करनी है. If omega 1 is equal to omega and omega 2 is equal to 2 omega. Omega 1, omega and omega 2. ओमेगा का स्क्वायर तो ओमेगा ही आएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर अगर हम इसका स्केयर लेंगे ओमेगा 1 का स्केयर तो ये क्या होगा? ओमेगा एंड ओमेगा 2 का स्केयर और 4 ओमेगा. यस सर. यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन ले लो T. नहीं, उल्टा कर लो. नहीं सर, ऐसे ठीक है. क्या? ऐसे ठीक है. And old tension ले लो T and new tension ले लो T1. Take their ratio. New tension T1, old tension T. New tension depend upon the 4 omega square and old tension depend upon only omega square. ओमेगा ओमेगा कट जाएंगे. Omega cancel. T dash is equal to 4T. बताओ, आप कोई डाउट है? नो सर. Anybody have doubt? No, sir. So what? अरे, why I am doing this again? What I did in this question. अब देखो, अगर मुझे ये पेपर में सॉल्व करना होता, if I have to do the same question in the final exam, how will I do? I know tension directly depend upon the acceleration, it depend upon the r omega square. So it depend upon the omega square. If omega become 2 times, so tension will become 4 times. ओके. यस. अब बताओ, आसान लग रहा है ना ये? यस सर. प्लीज सेंड मी द PDF. Yes. Sure, I'll send you PDF. And what should I do for today? This full chapter, you have a lot of work in this. But I'll only do 20 questions. हाँ. Okay, so let. 20. टोटल कितना है सर? क्या? क्वेश्चंस इसमें? इसमें क्वेश्चन टोटल है 74. सर उस हिसाब से एक एक दिन का डिवाइड करता हूँ. बिल्कुल. Now guys, ask me question from your doubts. No doubts. One by one. One Barinder, one Radhika. Radhika, your question. Then my Radhika, first question is 59th question. 59th. Okay. Yeah. Ninth. देखो ये सेम सिचुएशन है, but you took in the sliding, and when you take in the sliding way, then you consider angle. How? In this situation, diagram normal reaction between 2 kg and 1 kg, between these two. Considering surface is smooth. So what is happening in this situation? If this is theta, then you know this will have mg, correct? And this part will be mg sine theta. This part will be mg cos theta, right?
Same here. mg sin theta cos theta, same here. That is the difference. Understood my point? Radhika. Now सर all the वापस एक remaining. बार एक्सप्लेन करो कि वो Sure. तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि here this inclination is the only difference. Otherwise, it is exactly same as the normal reaction. यस सर है ना? And how do we calculate in the inclination part? So to calculate that type of questions, we use the formula We use sin theta. sin theta. What we did, कि this is mg, this will be cos theta, and this will be sin theta. Sin theta. है ना? That is the major difference Yes, sir. because we are considering angle. Through Yes, this, sir. now you have to make FBD, free body diagram, and through this you will get to know कि okay, g sin theta will be common in all the three masses. Okay. Understood? You know, Yes, all sir. the three masses, it will be common, and you have to take sin theta in every situation, Yes, sir. and then you will get answer. How? Example, if you see total force here, how will you calculate acceleration? Total force by total mass. Yeah. Total force will be present in the F sin form by total mass. Yes, sir. Correct? Now here you will see 18 Newton force is acting in the downward direction. This is of course Yeah. greater. Yes. At the same time, mg sin theta is also acting in the downward direction. Yeah. mg sin theta in downward direction. Yes, sir. I think I should explain this in the proper form. Correct? अच्छा question है. Barinder, you had same doubt? Yes, sir. ठीक. Very good. Better? Yes. So, in this situation, you have three mass, 3 to 1, correct? 3 to 1 kg na? Upward force is 60 Newton. Downward force is 18 Newton. And 30 degree is this. Am I right or is there any change? ठीक है सर. Paka? If this is the situation, you know every time there will be mg in the downward direction. Here, mg cos theta, theta is 30. So this will be mg cos 30. And in this direction will be mg sin 30. बताओ हाँ या ना? For all the three masses. For all the three masses. Now, the simplest way to calculate net force will be responsible for the acceleration. Net force, not total force. What is the net force? एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज करते हैं. हाँ, net force है ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा था नेट फोर्स कि सारी फोर्सेस को इंक्लूड करके अगर यहाँ पे मास है m, बिल्कुल यहाँ पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल, नीचे फोर्स लग रहा है mg. So normal force is not responsible for the acceleration, but normal minus mg is responsible for acceleration. Yes or no? Same here. Net force is equal to ma. Net force is what? Upward force is 60 Newton. This downward force is 18 Newton. This
And also, total mass downward mg sin theta is also acting in the downward direction. So, what is the total mass? 3216. 6 g 10 sine 30 value is 1 by 2 is equal to mass into acceleration. What is the value? This is 30, this is 1848, 60 minus 48, 12 is equal to 72. what is the mass? 3216 A. What will be acceleration? 2 meter per second square. Radhika, were you facing issue ki why we had this part? Yeah. एक्सेलरेशन ही निकालनी थी एक्सेलरेशन तो निकाली है ना हमने. आगे अब अगर एक्सेलरेशन निकालिए आप हम नॉर्मल निकाल सकते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस से निकालते हैं. बट यहाँ पे डाउट ये रहता है कि ये क्यों आ गया, कैसे आ गया? बिकॉज जब वो मूव कर रहा है तो नीचे एक ये फोर्स में लग रहा है ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी वाला फोर्स भी कंसिडर करना है. बट इफ यू टेक द नॉर्मल सिचुएशन, अगर यही मास हम प्लेन मोड में लेते लाइक दिस, यू हैव 3 kg मास, 2 kg मास एंड 1 kg मास. 3 2 1. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल इसको काउंटर कर देगा mg को, तो नेट यहाँ पे 0. अब सिर्फ तुम ये फोर्स देखोगे कि यहाँ पे 60 न्यूटन है, यहाँ पे 18 न्यूटन है, and then net force in this case F net will be equal to mass into acceleration. F net value will be 16 minus 18 is equal to mass 6. Acceleration we have to calculate. This will be, what is value? 42, 6a. So a value would have been 7 meter per second speed. अब मुद्दे की बात क्या है कि यहाँ पे हम mg और नॉर्मल का फैक्टर कंसीडर ही नहीं कर रहे. वी आर नॉट कंसिडरिंग नॉर्मल एंड mg. बाय नॉर्मल because they cancel out each other. They are not adding any value in the system. But इस केस में डाउनवर्ड की वजह से वो भी इम्पैक्ट आना है. बस यही मेन था. नाउ अब अगर तुम्हें कभी भी निकालना है एक सिस्टम के ऊपर, तो अगर दो बॉक्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, याद रखना कि दिस इज वन बॉक्स, दिस इज अनदर बॉक्स, है ना. ये अटैच है बट मैंने तो समझाने के लिए वो किया था. अब होगा क्या कि दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2. Two will exert force on one. One will exert force on two. This force is known as normal. Good. बताओ guys, any doubt? No, sir. Calculating normal is not the issue and also. प्रतिज्ञा तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, एकम तुमने भी नहीं किया, तो मैं ये भी बता दो एक बार. सर एक्सेलरेशन निकालने की बात कर रहे हैं. एक्सेलरेशन निकालने के बाद नॉर्मल निकालने का ही तो मतलब बता रहा हूँ. मान लो हमारे पास ये मास है m1, ये मास है m2, ये मास है m3. 3 मास है. इनके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है F, जो इनको स्लाइड करवा रहा है, आगे मूव करवा रहा है. और जब अगर ये मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी. सो वी हैव ए सिस्टम ऑफ 3 मास. वी आर पुशिंग देम with some F force, and because of that there is acceleration. We got to know that. How to calculate what is the acceleration? So in this situation, acceleration method is what is the total force divided by total mass, because there is no other force. Okay. So total force is F, total mass m1 plus m2 plus m3. You will calculate acceleration. Yes. Okay. But this is for all three together. Why? Because all three are moving together. Separate system, they're together. That's why the acceleration will be same throughout the journey. Okay. Acceleration for each system will be same because they're moving together. है ना. अगर मेरा पैर मूव कर रहा है तो मेरी बॉडी मूव कर रही है, तभी मेरी पूरी बॉडी साथ में चलेगी.
So acceleration of my whole body will be same. Okay. Now, if you want to consider one system, example, now I am making FBD of only mass M1. So what will you do? What is the force acting on this? F. What is force acting from this side? Normal between 1 and 2. है ना? And what is the acceleration? It is moving overall net with this acceleration. तो मैं कैसे निकालूं? F minus N is equal to M1A. Understood, guys? Right? Right? Example, this is N1, normal reaction. This is N1. Now, you take second mass, M2. Now, there is a normal reaction on it from this side, and there is a force by the another side. Let's take this is N2, this is N3. What is the net movement? It is moving on the right hand side. How will I calculate? I know N2 is more, that's why it is moving in the right hand side. So N2 minus N3 will be equal to mass into acceleration. Tell me, guys, find out. Like a No, sir. करेक्ट. तो ये एक जनरल मेथड है. अब इसी का यूज करके तुम अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो. अरे व्हाई आई एम डूइंग दिस अगेन. एग्जांपल, एक इजी सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. 58 वो ऐसा ही था. ठीक है. दिस इज फॉर पीपल हु डिड नॉट सॉल्व दोस क्वेश्चन. रिमेंबर, Radhika and Barinder, for you it will be easy, right? Yes, sir. So horizontal force is 10 Newton. This force applied on a block A, mass this. Mass of A and B is this given in the diagram. Block slide over a frictionless surface. We are not considering friction. What is the force exerted by block A on B? A on B. 10 Newton. नहीं, A 100% नहीं लगेगा ना, कुछ तो ये भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है. ए बी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? तो what will happen? First calculate acceleration. Total force by total mass. Total force 10. Total mass 5. Acceleration 2. I know this. अब ये देखो, in this case what will happen? सर 6 आएगा ना सर. पता नहीं, मुझे अभी निकालना है. देखते हैं. कोई डाउट? How much force exerted by block A on B? How much force exerted on this? I'm saying N force is exerted. Is there any force from the opposite side? No, sir. है ही नहीं कुछ. So can we say this N will be equal to MA, mass into acceleration? Excellent. 6 आ जाएगा. N will be equal to, what is the mass? 3, acceleration 2, 6. Is the answer 6, guys? Yes. Marinder? Yes, sir. 58. मैंने खाना भी खाया. 58 C. Yes. बताओ, बहुत आसान था. तो हमें ये समझना है कि ये नॉर्मल रिएक्शन बीच में कैसे काम करता है. हाउ दिस नॉर्मल रिएक्शन एक्ट. अब जैसे मैंने बी के केस में, इफ आई हैव टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, देन फोर्स ए, लेट्स टेक N1. There is no force from other side, free, and it is responsible for the mass into acceleration. What is the mass? 3. What is the acceleration? 2. 6. Done. Understood? And in next class, we will finish more question from this chapter, and next class will be the last class for this chapter discussion. Okay.
And now you guys have to finish full chapter 74 question and ask your doubt. Tomorrow we'll finish doubt only. No theory, only questions. Understood? Yes, sir. तो कैसा लग रहा है ये चैप्टर प्रतिज्ञा? हाँ,